जय जगन्नाथ फिजिक्स मंत्र आउ एक अध्याय को समस्त को स्वागत। आज टॉपिक ऑफ द डिस्कशन होची स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पिला माने आमे जेतेबेले यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढितले सेतेबेले आमे कोन पढितले ना फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। गोटे होची फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। किंतु जेतेबेले आमे मोशन चैप्टर पढिबा आरंभ कले बा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन सेतोले आमे कोन पढिले ना कि फिजिकल क्वांटिटीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एठी क्वेश्चन माइंड रे स्ट्राइक करूची जदी फिजिकल क्वांटिटी को आमे ऑलरेडी दुई भाग रे विभक्त करि सारी थिले देन व्हाट इज द नेसेसिटी और नीड टू फर्दर क्लासिफाई फिजिकल क्वांटिटीज इनटू टू मोर कैटेगरीज। से कैटेगरीज कोन हला ना स्केलर एंड वेक्टर, जोटा कि आज का टॉपिक रे आमे पढिबा आ डिस्कशन करिबा। सो प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी classified physical quantities into fundamental quantities and into derived quantities. Here physical quantities are classified into two categories. ना स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी रे हम डिवाइड करले आ वेक्टर क्वांटिटी रे डिवाइड करले। तेनु व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर हमरो पार्ट ऑफ डिस्कशन जो आज अछि से तो फर्स्ट पार्ट कोन दोची व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। सो हम जानले फिजिकल क्वांटिटी जहा को हमें कहा कहबा ना जहा को हमें डायरेक्ट हो बा इनडायरेक्ट मेथड रे मेजर करि पारचुंती ताको हमें फिजिकल क्वांटिटी बोली कहउछन। जहा को हमें मेजर करि पारचुंती दैट मींस तार किछि मैग्नीट्यूड अछि, जहार मैग्नीट्यूड अछि ताको हमें मेजर करि पारचुंती। सो फर्स्ट कोन होउची जो दीटा भाग रे विभक्त करा हला गोटे स्केलर क्वांटिटी बा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहा को कहबा ना जो फिजिकल क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड ओनली, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। सेही क्षेत्र रे वेक्टर क्वांटिटी कहा कहबा ना जो क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड सहित डायरेक्शन अछि ताको हमें कोन कहबा ना वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी रे केवल मैग्नीट्यूड आ वेक्टर क्वांटिटी रे कोन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्वांटिटीज हैविंग स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड प्लस डेफिनाइट डायरेक्शन। ए दीटा कंडीशन को जे फुलफिल करछि दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज एंड जहार केवल मैग्नीट्यूड अछि ताको हमें कोन कहउचंदी ना स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी हमें कहा को दे परिबा। फॉर एग्जांपल टाइम जेतरा हमें टाइम मेजर करिबा तार केवल गुडे मैग्नीट्यूड अछि सेकेंड आवर मिनिट किंतु टाइम रो कोनोसी डायरेक्शन नाही। टेंपरेचर स्पीड एमटी आहुरी अनेक एग्जांपल्स हमें दे परिबा। से क्षेत्र वेक्टर क्वांटिटी रो एग्जांपल्स कोन हबो ना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम एमती अनेक आहुरी एग्जांपल्स अछि जहा को हमें वेक्टर बा स्केलर एग्जांपल रूपे दे परिबा। किंतु बेसिकली हमें जानिले वेक्टर क्वांटिटी कोन स्केलर क्वांटिटी कोन। स्केलर क्वांटिटी कहा कहबा ना जहा केवल मैग्नीट्यूड अछि आ वेक्टर क्वांटिटी कहा कहबा जहार स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड सहित स्पेसिफिक बा डेफिनेट डायरेक्शन मध्य अछि। जेमिति फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बा चेंज इन पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डिस्टेंस को हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज इन पोजीशन को हमें कोन कहउछन डिस्प्लेसमेंट। से वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम ए सब क्षेत्र रे मैग्नीट्यूड सहित गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन अछि। नाउ द डिस्कशन ऑफ जोटा कि हमें प्रथम कहिथिले कि जेतले फिजिकल क्वांटिटी को ऑलरेडी दीटा भाग रे विभक्त करा हितला पुनी कोन फर्दर आवश्यकता आसी गला जहा को हमें पुनी स्केलर बा वेक्टर क्वांटिटी रे विभक्त करे बा क्लासिफाई कले से जिंसटा को हमें एठी डिस्कशन करिबा। हमें जेतले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढुथिले सेतले कोन जानुथिले ना गोटे बॉडी जेतले गोटे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे सेतबेले हमें ताकू कोन कोंती मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बाय जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट अछि ता भितर जदी गोटिए कोऑर्डिनेट या सहित एसोसिएट हेतिबो टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन ताकू हमें कोन कहउचंदी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तेनु ए क्षेत्र रे कोन होतला धर सपोज ए मार्कर को गोटे मु ऑब्जेक्ट रूप रे ग्रहण करूची। मार्कर टी विथ रेफरेंस टू ओ ओरिजिन नु आइदर स्ट्रेट लाइन में मोशन करछि आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जीवो
নহলে बैकवर्ड डायरेक्शन रे जीवो নহলে आइदर अपवर्ड डायरेक्शन रे जीवो নহলে डाउनवर्ड डायरेक्शन रे जीवो तेणु जेतले गोटे बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करूथाय तार डायरेक्शनल एस्पेक्ट को हमें केमिति फुलफिल करि परिबा ना केवल गोटे पॉजिटिव साइन ने নহले गोटे नेगेटिव साइन ने तेणु डायरेक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ ए बॉडी इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कैन बी फुलफिल्ड बाय यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स किंतु एई क्षेत्र रे जेतले गोटे बॉडी टू डायमेंशनल मोशन बा थ्री डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन कोन मोशन इन ए प्लेन और थ्री डायमेंशनल मोशन कोन ना मोशन इन स्पेस क्षेत्र रे ट्रैवल करूथाय सेतले तार डायरेक्शनल एस्पेक्ट को हमें केमिति फुलफिल करिवा से क्षेत्र रे तो आउ पॉजिटिव किमा नेगेटिव साइन माध्यम रे ताको फुलफिल करि हेबो नाही तेनु से क्षेत्र रे हमकु डिफरेंट जगह रे डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करिवार अछि तेनु से जो चैलेंज बा इशू को हमें फुलफिल बा मीट करिया पय हमें कोन करले ना दुईटा फर्दर क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेले जहा को हमें कोन कहउचंती स्केलर क्वांटिटी बा वेक्टर क्वांटिटी बुझियला जदि क्वेश्चन आसे काहे कि वेक्टर रो आवश्यकता पड़ी गला बा नीड ऑफ ए वेक्टर व्हाई वेक्टर इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन जदि आसे सेतले क्वेश्चन न तुमे आंसर कोन देबो ना टू फुलफिल द डायरेक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ ए बॉडी इन मोशन इन टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन वी नीड फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज टू बी इंट्रोड्यूस्ड लाइक वेक्टर और स्केलर चलो नेक्स्ट रे कोन थिला टॉपिक ऑफ द डिस्कशन हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर कोन स्केलर कोन जानिले नाउ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर स्केलर को कौन केमिति रिप्रेजेंट करंती स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंट बाय ए नंबर विथ ए प्रॉपर यूनिट जदी टाइम को हम रिप्रेजेंट करचंती हमें कोन लिखचंती 5 सेकंड सेकंड ता होची यूनिट 5 ता होची उटे नंबर सिमिलरली जदी हमें गोटे मास को रिप्रेजेंट करचंती कोन लिखचंती 10 केजी केजी होची तार प्रॉपर यूनिट 10 होची उटे नंबर तेनु स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंट बाय ए नंबर विथ प्रॉपर यूनिट here the vector is represent जो क्वेश्चन है हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड सेतला सिंगल मार्क रो क्वेश्चन आसीओ सेतला तुमे कोन लिखिबो ना वेक्टर क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंट बाय ए स्ट्रेट लाइन विथ an arrow head arrow over its head गोटे स्ट्रेट लाइन माध्यम रे रिप्रेजेंट करा जाय आ गोटे जहार आरो मार्क तार हेड ऊपर थाए तेनु ए जो स्ट्रेट लाइन को हमें गोटे वेक्टर वाली कहि परिबा आ ए जो वेक्टर रो लेंथ ऑफ द वेक्टर और लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन represents the magnitude and the arrow mark represents the direction ए दी पॉइंट लिखिबो a vector is represented by a straight line with an arrowhead over its head and length of the straight line represents the magnitude and the arrow represents the direction of the vector लिख परिबो पिले माने सिंपल डेफिनेशन किछि आदर रॉकेट साइंस नाही तेनो सपोज ए बी इज ए वेक्टर ए पॉइंट को हमें कोन कहिबा ना एटा स्टार्टिंग होची तेनो ओरिजिन और इनिशियल ऑफ वेक्टर एंड बी पॉइंट को कोन कहिबा ना टर्मिनल और हेड ऑफ द वेक्टर एटा को हमें आउ कोन कहि परिबा ना जेहेतु यार गोटे लांजो भलिया बा स्टार्टिंग पॉइंट लांजो पॉइंट तेनो एको हमें कोन कहिबा टेल बोली भी टेल ऑफ ए वेक्टर बोली भी कहि परछन तेनो एबे हमें जानले केमिति गोटे वेक्टर को रिप्रेजेंट करछंती आ वेक्टर को तो हमें रिप्रेजेंट करछन हमें कोन करछंती गोटे कैपिटल लेटर बा गोटे लेटर माध्यम रिप्रेजेंट करछंती जहा पर गोटे आरो मार्क रहउची बा गोटे बोल्ड फॉन्ट रे ताको हमें रिप्रेजेंट करछंती तेनो जेतले क्वेश्चन आसीबो हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर ताहले एई पॉइंट्स गुडा को हमें भलो भाबरे लेखिबा एबे बुझियला नेक्स्ट पॉइंट होची टाइप्स ऑफ द वेक्टर वेक्टर रा केते प्रकार अछि से वेक्टर विषय जानिबा आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मने रख पिले माने वेक्टर चैप्टर हमरो थ्रो आउट द बुक बा थ्रो आउट द सेशन ने हमको आवश्यकता पड़िबो द्वितीयतः सेकेंड ईयर चैप्टर रे जते गुडी को फिजिकल फेनोमेना विषय रे हमें पढिबा प्रत्येक क्षेत्र रे हमरो वेक्टर रा जानिबा को वेक्टर विषय रे जानिबार बा एप्लीकेशन अछि तनो वेक्टर चैप्टर को सीरियस भाबर नै पढो एथि यदि हमें थोरली कांसेप्ट क्लियर होबा ताले आगु को जते भी पाठ अछि हमको बुझिबा को सहज हेबो
नाउ द क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. हेडिंग दे दियो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर प्रकार भेद बा केते प्रकार वेक्टर क्वांटिटीज अछि. ए जो वेक्टर क्वांटिटी रो प्रकार भेद आमे करतंती तार सीरीज रे फर्स्ट नंबर आमे काहकु दबा ना इक्वल वेक्टर्स. दुईटा वेक्टर को आमे इक्वल वेक्टर केतेबेले कहिबा ना जेतेबेले सपोज ए गोटे वेक्टर बी गोटे वेक्टर जदि ए रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन आमे वेक्टर ए को कोन कहिबा वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी. सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. वेक्टर बी रो ए रो मैग्नीट्यूड both the vectors possesses equal magnitude and same direction. से क्षेत्र रे कोन कहिबा ना वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी और वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी. आउ कोन कहि हे परिबो ना जतले गोटे वेक्टर को सपोज गोटे वेक्टर अछि ताको हमें कोन करले ना सेम डायरेक्शन में पैरेलली डिस्प्लेस कर देले. यार पोजीशन ए जगह थिला ताको डिस्प्लेस करके अन्य गोटे जगह को नै आसले इन द सेम डायरेक्शन एंड पैरेलल टू दैट वेक्टर. ताहाले हमें कोन कहिबा ना ये वेक्टर को ये प्रीवियस वेक्टर रो इक्वल वेक्टर. सपोज वेक्टर ए को हमें पैरेलल डिस्प्लेस करके आउटे जगह को वेक्टर ए डैश वेक्टर कर देले. त ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर. तेनु एथि भी शॉर्ट क्वेश्चन उठी आसी पारे. तेनु व्हाट इज इक्वल वेक्टर सेतले लिखिबो कोन ना गोटे वेक्टर रे जतले दुईटा वेक्टर रे मैग्नीट्यूड समान थाए आ डायरेक्शन भी सेम थाए ताहाले दुईटा वेक्टर को हमें कोन कहिबा इक्वल वेक्टर. सिमिलरली नेक्स्ट सीरीज रे किया आसीबो ना नेगेटिव वेक्टर. केतोळे दुईटा वेक्टर को हमें नेगेटिव वेक्टर भी कहिबा. सपोज ए गोटे वेक्टर एंड बी भी गोटे वेक्टर. जेतोळे both the vectors possesses equal magnitude but opposite direction. सेतोळे कोन कहिबा a vector is negative vector of b और b vector is equal to negative vector of a. आउ त negative vector is represented by and is represented by putting a negative sign. गोटे वेक्टर साइड रे तला नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करचंती ताले नेगेटिव वेक्टर बोली हम ताको जानचंती. हम जानले इक्वल वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर. नाउ ये सीरीज रा थर्ड नंबर के ना मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस एउठु ही तुमरो बहुत जिंस सिखिबार अछि. तेनु केयरफुल देखो यूनिट वेक्टर एप्लीकेशन बहुत जिंस अछि. तेनु यूनिट वेक्टर को ध्यान से सुनो. यूनिट वेक्टर्स या टाइटल लो ही जणा पडुची यार मैग्नीट्यूड निहाती भाबरे गोटे यूनिट संख्या हेतिबो बा यूनिट अमाउंट रो हेतिबो. तेनु सेति पय ताको हम यूनिट वेक्टर कहउचंदी. तेनु सपोज गोटे वेक्टर ए जति गोटे गिवन वेक्टर होची वेक्टर ए सेही डायरेक्शन में गोटे यूनिट अमाउंट रो जहार मैग्नीट्यूड होची गोटे यूनिट जदी वेक्टर नै जिबा ताले वेक्टर ताको हम कोन कहिबा यूनिट वेक्टर ऑफ ए. तेनु यूनिट वेक्टर को हम कोन कहिबा ना डेफिनेशन कौन लिखिबा ना यूनिट वेक्टर ऑफ ए ऑफ एनी वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड. जहां मैग्नीट्यूड ही यूनिट थिबो यूनिट मैग्नीट्यूड टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर. जहार डायरेक्शन मूल वेक्टर रो डायरेक्शन सहित समान थिबो किंतु मैग्नीट्यूड गोटे यूनिट थिबो. तेनु यूनिट वेक्टर को हमें केमति जानले ना गोटे सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू तार मैग्नीट्यूड इनटू तार डायरेक्शन. हम जानछथि वेक्टर रो मैग्नीट्यूड सहित डायरेक्शन अटैच हेतै. तेनु ए क्षेत्र रे हमें वेक्टर को केमति रिप्रेजेंट करले ना तार मैग्नीट्यूड सहित तार डायरेक्शन. जेहेतु मैग्नीट्यूड सहित यूनिट रो यार मैग्नीट्यूड होती यूनिट. तेनु मैग्नीट्यूड रे कोनोसी फरक आसला नै किंतु यार डायरेक्शनल एक्सेप्ट कोन रहिला मूल वेक्टर सहित समान रहि. हियर द नेगेटिव वेक्टर इज कोन हबो ना वेक्टर ए डिवाइडेड बाय तार मैग्नीट्यूड.
बुझिला यूनिट वेक्टर को केमिति हमें बाहर करि परिबा आ ये क्षेत्र रे हमें एटा को केमिति प्रोनाउंस करिबा ना इज प्रोनाउंस्ड बाय ए कैप नहले ए हैट नहले ए कैरेट एटा को हमें तीनटा भाग रे प्रोनाउंस करि परिबा यूनिट वेक्टर को ए कैप ए हैट एंड ए कैरेट सिमिलरली एटा को केमिति प्रोनाउंस करिबा ना modulus of vector a and this gives the magnitude of the vector modulus कौन करे ना सही जो गिवन वेक्टर रो मैग्नीट्यूड को दर्शाए आ यूनिट वेक्टर कौन दर्शाए ना डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर एबे जानि पहिले यूनिट वेक्टर यदि क्वेश्चन आसे हमें ताको बाय डेफिनेशन आंसर दे परिबा नाउ एही सीरीज रो तृतीय रे की आछि ना को इनिशियल वेक्टर सपोज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए बी सी ये क्षेत्र रे कोन आउ एटा तंगर ओरिजिन ये क्षेत्र रे कोन होची समस्त तंगर इनिशियल पॉइंट बा ओरिजिन समान तेनु वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट और वन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स क्वेश्चन आंसर लिखि परिबो व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर तल को इनिशियल वेक्टर कोन हला ना वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल पॉइंट सिमिलरली यार 4 नंबर बा 5 नंबर सीरीज रे के आसीबो ना को टर्मिनस वेक्टर्स एठी कोन देखले सेम टर्मिनल सेम इनिशियल पॉइंट सिमिलरली जदी वेक्टर्स मानकर टर्मिनल पॉइंट सेम हेतिबो ताहले वेक्टर ए vector b and vector c are called co-terminus vectors those vectors having same terminal point are called co-terminus vectors बुझियला what is co-initial vector and what is co-terminus vector now the question is co-planar vector planar रो हमें बुझचोंती कोन गोटे प्लेन नेक्स्ट कोन आसला co-planar vector जदि numbers of vectors are acting in the same plane then suppose ये गोटे plane xy plane x coordinate y coordinate ताहले vector a vector b and vector c are called कौन ना co-planar vectors having same plane or acts in a same plane are called co-planar vector now another important types of vector कौन ना co-linear vector linear अर्थ कौन straight बा straight line co-linear vectors जेतबेले दुईटा वेक्टर रो एक्शन डायरेक्शन ऑफ एक्शन बा सेम लाइन ने एक्ट करथांती सेतबेले हम से दुईटा वेक्टर को कौन कहंती ना co-linear vector either same line ने एक्ट करथबे नहले along parallel लाइन ने ही एक्ट करथबे से क्षेत्र में ता कोन कहबा co-linear vectors when two vectors act along a line or along parallelly then vectors are called co-linear vector पुणी फर्दर से कोलिनियर वेक्टर को हमें सपोज दीटा भाग रे डिवाइड करे कौन से भाग ना लाइक वेक्टर लाइक और अनलाइक लाइक कोलिनियर और अनलाइक कोलिनियर लाइक कोलिनियर को हमें केमिति कहिबा जदी एक्शन लाइन ऑफ एक्शन इन सेम डायरेक्शन और दे आर पैरेलल टू ईच अदर वेक्टर ए is collinear to vector b माने तार अर्थ होची angle between the two vectors is 0 degree here theta is equal to 0 degree से क्षेत्र रे हमें कोन कहिबा ना like collinear vector or parallel collinear vector similarly जदी दीटा vector acts in opposite direction then both the vectors are called कोन unlike collinear vector बा anti parallel collinear vector here
एंगल केते ना थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बुझला ए सीरीज रो आ गुटे वेक्टर कोन अछि ना फ्री वेक्टर जदी गुटे वेक्टर रो इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड then that vector is called free vector जेमिति गोटे स्ट्रेट लाइन मोशन ने वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर रो टर्मिनल पॉइंट फिक्स न थाए से वेरी करू थाए तेनु से क्षेत्र दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड जेतला रिप्रेजेंट करबा ताको हमें कोन कहिबा ना फ्री वेक्टर आ गोटे कोन तार आसीबो से सीरीज रे ना फिक्स्ड वेक्टर जदी जेमिति टर्मिनल पॉइंट इज नॉट फ्री फिक्स जोगु ताको हमें कहले फ्री किंतु जेतला गोटे टर्मिनल पॉइंट फिक्स्ड थिबो टर्मिनल पॉइंट ना इनिशियल पॉइंट जदि इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड थिबो ताहले ताको हमें कोन कहिबा ना फिक्स्ड वेक्टर जेतले इनिशियल पॉइंट फिक्स नथिबो ताको हमें कोन कहिबा फ्री वेक्टर टिके करेक्शन करनबो फ्लो रे टिके मिस्टेक हे जाउची तेनु फ्री वेक्टर रे कोन रहला इनिशियल पॉइंट नॉट फिक्स्ड वेक्टर क्षेत्र रे कोन रहला ना इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी जेतले गोटे पोजीशन वेक्टर माध्यम रे गोटे बॉडी को रो पोजीशन को हमें रिप्रेजेंट करचंती से क्षेत्र रे पोजीशन वेक्टर कोन ना गोटे फिक्स्ड वेक्टर काहे ना विथ रेफरेंस टू ओरिजिन तार इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड था किंतु जेतले गोटे बॉडी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तार वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ये सब कोन हुए ना फ्री वेक्टर ऊपर रिप्रेजेंट करा जाय आशा करूची जहा जहा आज टॉपिक हमें कवर कले ए चैप्टर रे जेमिति कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर नीड ऑफ वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड कौन पढ़ले आ गोटे जिनस कौन पढ़ले ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स ए जो मेजर टॉपिक को हमें कवर कले समस्त भलो से पढ़िबे ध्यान देकी पढ़िबे वेक्टर चैप्टर रो एप्लीकेशन प्रायतः सब चैप्टर बा यूनिट रे कोठी ना कोठी अछि तनो एटा को इंपोर्टेंस भाबी पढ़िबे आ फिजिक्स सन सहित जोड़ी होबा पई फिजिक्स सन रो YouTube चैनल को समस्त लाइक करिवे शेयर करिवे आ सब्सक्राइब करिवे हमर चैनल ग्रामीण अंचल रे जो माने शिक्षा रो गोटे न्यूनतम मानवी पाई पारु नांती स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पाई पारु नांती ताको केमिति गोटे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को हमें सहज रे उपलब्ध करई परिबा सेति पई फिजिक्स सेंटर प्रयास जारी रहिछि जय जगन्नाथ आशा करछि समस्त मन लगई पाठ पढिबे आ +2 साइंस को सीरियस भाବରେ पाठ पढी गोटे निजको निज गोटे जूनियर साइंटिस्ट भलिया फीलिंग्स भी निज भितर को आनी जय जगन्नाथ।